Good morning, students. We have been left with one identity, that is last 8. So, what is identity number 8? We can see here that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. It may be somehow complicated to you at first time, but later on you will see that it is very easy to learn. How you can learn it? You are having x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. So what are the variables here? You can see that variables are x, y and z. So what you have to do, you have to write all the variables into addition like x plus y plus z, और उसके बाद what you have to do, you have to write x square plus y square plus z square, and after that minus उन सब का दो का combination x y y z and z x. So this is the way to learn this equation. Now how to use these identities in questions. In question number 9 of last exercise, what is given? Question number 9 is you have to prove x cube plus y cube is equals to x plus y into x square minus xy plus y square. Similarly, second part is of minus x cube minus y cube. You have to prove both these polynomials equations. Now, how can we solve it? Let us see second part proof. First of all, what you have to do, you have to mark both these parts of question number 9, first and second. You have to note both these questions as in the form of identity, that is identity 9 and identity 10. These both identities are very much important. You have to note it down as identity, and what you have to do after completion of this exercise, last exercise, what you have to do, you have to note all the identities on a single paper. That is, here we are having 10 identities, and further on we will also have 2 more identities. So in total we will be having 10 to 12. So what you have to do, you have to note all these identities on a single paper so that you can learn easily from a single page. So now how to apply these two identities, let us see. But first of all, let us see the proof of second part of question number 9. That is, you have to prove. So let us start by taking right hand side. Right hand side is this. So you will take this, and now what you have to do, you have take x, and then you have to multiply x by whole this number, then you will take minus y and you will multiply minus y by this entire number. So after multiplication, you can see here that what will you get? You will get this equation, and out of this you can see x square y will cancel out to minus x square y, x y square cancel out with minus x y square. So what you are left with? X cube minus y cube, which is our left hand side. So hence we have proved that this identity is true. So we will use these identities in our next question, that is question number 10. First of all, you have to learn x cube plus y cube क्या होगा. तो यहाँ पे कितने variables है? 2 x and y. So what you have done? X plus y. Then what you have to do, you have to write the x minus y whole square formula, that is x square plus y square minus xy. तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, अगर x क्यूब प्लस y क्यूब है तो ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा, अंदर माइनस xy होगा. लेकिन अगर x क्यूब माइनस y क्यूब है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा, अंदर प्लस xy होगा. Okay, so this is the only change in sign that you have to do. अगर प्लस है तो ब्रैकेट के बाहर प्लस, अंदर माइनस एक्स वाई, और अगर बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर प्लस एक्स वाई. So this is the only difference between both these equations. Now moving on to question number 10. Question number 10 is, you can see here 27y cube plus 125z cube. Among all the identities we have learned so far, you can see that x cube plus y cube is the only identity which we have learned in question number 9. So we will use this identity. क्वेश्चन नंबर 10 किस फॉर्म में है? क्यूब की फॉर्म में. सो क्यूब की फॉर्म में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. बाकी क्या थी? एक्स माइनस वाई क्यूब या एक्स प्लस वाई होल क्यूब.
ऐसा था, लेकिन सेपरेट जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वो एक ही आइडेंटिटी जो अभी क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ी वही यूज़ करेंगे. हाउ कैन वी यूज़ दिस आइडेंटिटी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. So from on comparison what you can see, on comparison you can see value of x will be 3y, value of y will be 5z. 5z क्यों? क्योंकि 5z का क्यूब करके 125z क्यूब आएगा. एंड वन मोर थिंग, आई हैव गिवन यू होमवर्क एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट यू हैव टू लर्न द स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10 का क्यूब याद होना चाहिए एंड 1 to 20 का स्क्वायर याद होना चाहिए. So you have to learn all the square and cube of the numbers. From here you can see the value of x is 3y, value of y is 5z. Now what you have done, you have just put the value of x and y in this identity. So after putting the value of x and y, you can see we are having this number. So if you solve this, you will get 3y plus 5z, 9y square minus 15y प्लस 25z स्क्वायर. एंड इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें फैक्टराइज करना था. फैक्टराइजेशन का मतलब किसी एक पॉलिनोमियल को दो या दो से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स में लिखना. फ्रॉम हेयर यू कैन सी वी हैव रिटन इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 terms, सो दैट मीन्स इट इज़ द फाइनल आंसर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड पार्ट, दैट इज 64m cube minus 343n cube. From here you can also see that it is a form of x cube minus y cube. So यहाँ पे x की वैल्यू कितना, किस नंबर का क्यूब 64 होता है? 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64. So we can see that value of x is 14 and 343 is the cube of 7. So we can say value of y is 7n. So now if we place the value of x and y into this equation, we will get the answer. What I have done here, I have just put the value of x and y in the identity and this is our answer. You have to note it down, and if you are having any doubt you can ask me. Moving on to next question, that is question number 11. You have to factorize it. Question number 11, 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. You can see identity number 8 says that we are having three variables, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. So you can see this question is somehow the form of identity 8. So let us see if we are right or wrong. This is our identity 8. So if we compare it with question, we can see that value of a cube is 27x cube. So value of a कितनी होगी? 3x. Value of b कितनी होगी? अगर b cube y cube है, so value of b will be y. If c cube is z cube, so value of c will be z. So from here we have come up with value of a, b and c, that is 3x, y and z. And if we place all this value of a, b and c in this identity, what will we get? We will get the result. So let us see what we have done here. We have just put the value of a, b and c, that is a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. So this was the formula. We have just equated the value of a, b and c. Moving on, question number 12. Question number 12 is you have to verify. Okay, you have to keep in mind identity number 8 is very much important because उसका जो फर्स्ट टाइप है आइडेंटिटी का वो क्या है? फर्स्ट फॉर्म जो है उसका ये है. लेकिन इस फॉर्मूला से हमारे पास फर्दर दो फॉर्मूले और मिलेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो यू हैव टू राइट दिस आइडेंटिटी एज 3 फॉर्मूलाज. इस एक सिंगल आइडेंटिटी को यूज़ करके हमारे पास 3 फॉर्मूला आएंगे. सो वी हैव टू नोट ईच एंड एवरी फॉर्मूला विद important mark on it. So let us see further 2 formulas from this equation. Question number 12 will help us in that new formula. Question number 12 is x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. You have to prove this is equals to this. How can we prove it? x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. ये क्या होता है? Using the identity number 8, this is equals to this. We know very well.
Now moving on, how can we use this identity in our proof? What we have to do now, we have to multiply this side of question, this side of identity, we have to multiply and divide it by 2. So what will we get? We will get 1/2 xyz, और यहाँ पे 2 था तो उसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया. सो व्हाट विल वी गेट? 2x² + 2y² + 2z², 2xy, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 से डिवाइड कर दिया. सो व्हाट इज द, हाउ कैन वी राइट इट एज? वी कैन राइट 2x² को x² + x² लिख सकते हैं. So we have written it here. Similarly 2y² को y² + y², 2z² को z² + z², and these 3 terms as it is. Is that clear? Now moving on, in next step what we have done, see question में क्या था? What you have to prove? You have to prove x - y whole square एंड y - z होल स्क्वायर. सो अगर x - y होल स्क्वायर है, इसका मतलब हमें x - y होल स्क्वायर को सोल्व करके जो टर्म आती है, क्या आती है? x² + y² - xy -2xy, सॉरी, उन तीनों टर्म को हमें इकट्ठा लिखना पड़ेगा, जब भी हमें x - y होल स्क्वायर मिलेगा. सो लेट अस सी क्या हमारे पास ये तीनों टर्म है या नहीं. फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट x² + y² - 2xy, इन तीनों को मिला के क्या बनेगा? x - y होल स्क्वायर. सेकेंड टर्म क्वेश्चन में क्या थी? y - z होल स्क्वायर. सो लेट अस सी क्या हमारे पास y - z होल स्क्वायर की सारी टर्म्स अवेलेबल है या नहीं. सो y² + z² - 2yz, इसको मिला के क्या बनेगा? y - z होल स्क्वायर. नाउ थर्ड टर्म वॉज x - z होल स्क्वायर. सो उसके लिए x² + z² - 2zx. सो इन तीनों होल स्क्वायर्स को हम, इनकी टर्म्स को हमने कलेक्टिवली लिखा और उसके बाद हमने उसको सिंपल फॉर्म में कंबाइन करके x - y होल स्क्वायर, x - z होल स्क्वायर एंड y - z होल स्क्वायर की टर्म में लिख दिया. सो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम x³ + y³ + z³ - 3xyz, और इसको सोल्व करके what is the our final answer? Final answer is this. So we can say x³ + y³ + z³ - 3xyz is equal to half xyz, x + y + z, and this equation. So hence we have proved that left hand side and right hand side are equal. So what we have done here, what you have to do now, you have to mark this entire equation as important result, और you can say जो आइडेंटिटी नंबर 8 लिखी है उसके साथ में ही तुम्हें इसको भी लिखना है, बिकॉज आइडेंटिटी 8 क्या थी? लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल था, उसमें भी ये था, इसमें भी ये है, लेकिन राइट हैंड साइड इसमें अलग है, उसमें अलग था. सो तुम्हें दोनों फॉर्मूलाज को एक साथ लिखना है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 says, if x + y + z is 0, it is given, so you have to prove x³ + y³ + z³ is equals to 3xyz. From here you can see x³ + y³ + z³ है और 3xyz है, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी? 8th आइडेंटिटी, that is this one. Now in this question it is given that this value is 0. अगर इस आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू 0 है तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 0. सो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0. अगर ये टर्म 0 है और अगर हम 3xyz इधर नेगेटिव का है, इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. सो वी कैन से x³ + y³ + z³ is equals to 3xyz. So this is the simple solution of this question. Let us see what we have done. We are having this identity and it is given that x + y + z is 0. So if this is 0, so right hand side will be 0 and 3xy will come this side and it will become positive. So also this result is very much important. This result is also based on identity 8. So you have to write this also as important under identity 8. So you can see from a single identity we have come up further with 2 more rules or 2 more formulas. So you have to write all these 3 formulas together. Now moving on,
today we have done question number 9, 2 formulas we have learnt, question number 10, 11, 12 and 13, and we have done one identity of question 8, one identity 8 and two identities of question number 9, and furthermore two more formulas from question number 12 and 13. So your homework is you have to complete your notebook till question number 13, and you have to learn all these 12 identities, because 10 identity we are having from question number 9, or you can say this is identity number 12 and this is identity number 11. So in total we are having 12 identities. So you have to learn all these identities properly, and rest questions, that is question number 14, 15 and 16, we will be doing tomorrow. So for today you have to just note down, and if you still have any doubt you can ask me. That's all for today, and thank you.